Hello, good afternoon. There I start with potential and kinetic energy. So here we discuss about energies. So energy, energy. So what is energy or what the term called energy? Energy क्या है? तो energy of a body. Energy of a body. Energy of a body is defined as its capacity or ability to do work. एनर्जी इज़ अ मेज़र ऑफ ए वर्क. तो एनर्जी क्या है? वर्क को मेज़र करती है एनर्जी. और स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा यूनिट क्या है इसकी? जूल है. ऐसा यूनिट जूल है. जैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फोर्स की ml टी स्क्वायर T-2. ठीक. तो एनर्जीज आर डिफरेंट टाइप सच एज हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. हेयर इन मैकेनिक्स वी डिस्कस मोरली मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी the energy produced by mechanically means by doing acting some mechanical work like a rotating of wheel produce a mechanical energy. Or they have two forms, two type or two forms is also there. Kinetic energy and potential energy, subtly classified by two type, kinetic energy and potential energy. So here we start with kinetic energy. The energy processed by the body by virtue of which its motion done. The energy which produce at a time of motion or for do some work. तो or we can say that moving object the energy hold by moving object before coming in rest.
जो एनर्जी होल्ड करेगा, जो एनर्जी मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। स्टॉप होने से पहले तक जो एनर्जी होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी। इसका एग्जांपल है बुलेट फायर। अगर हम गन को फायर करें तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एग्जांपल्स तो हमें पता ही है, मोशन कार और मोशन कार और इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर वेयर द वी इज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो तो दिस इज अ मेन रीज़न टू बॉडी remain in kinetic or having some momentum. Then we have potential energy. Potential energy, तो potential energy and kinetic energy. तो work energy theorem we have done in last lecture. So for work energy theorem we are calculating this v2 square minus half mv v1 square. This energy theorem, work energy theorem, is for the constant mass oscillation. अगर there is a no mass does not has not constant, so the mass become change during kinetic during motion, kinetic motion. So we can say that k initial, k final minus k initial, kinetic energy final or minus k initial is a work done or defined like a work done. So here force the work done also defined as a integrating force ds or dr or dx also, integrating for integration, और यहाँ पे डॉट साइन ऑल्सो, dot product of force and displacement with some limit a to b is a definition for force. The work done in moving a body from one point to another. तो from point a to b, force on a body, done motion. तो have a work energy force constant. तो it's simple. तो वेरिएबल फोर्स के लिए एनर्जी थ्योरम है. now so here we also done for the potential energy. Energies. So potential energy is energy stored in a body or a system by virtue of its position in a field of force or by its configuration. तो potential energy, the amount, we can say the amount of work that the body or system can do in passing from its present position और configuration, जहाँ पे वो है उस जगह configuration, और from कहाँ से, from some standard position, or the standard position we let be zero position, or where the no force is acts on a body. So potential energy is defined
तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन डिफरेंटली. तो एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल आर ग्रेविटेशनल एनर्जी, gravitational potential energy. We discuss in other some video that gravitational potential energy for earth और for a circle potential energy for earth and circle, ये सब हम पढ़ेंगे. और ये हमारा सेकंड आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी we also take this example last lecture that a spring moves here this way to like this and contain some potential energy. By holding it contains some potential energy, and we remove our hand from it, they go back to its standard position. They also example of potential energy. Or potential energy somehow some potential energy is stored in a spring attached body. और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वी हैव डन इन 12th also, that the formula we know, V equals to half Q upon R. That's a formula where K is a 1 upon epsilon naught, 4 by epsilon naught Q upon R, potential energy for a object, for a spherical to at a point. Now ग्रेविटेशनल पढ़ा हमने. अब डिस्कस नाउ वी आर डिस्कसिंग सम forces, conservative force. तो so a force is conservative if the work done by the body, by the force, किसी फोर्स के साथ अगर हम किसी बॉडी पे वर्क डन करेंगे, अब फोर्स है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, बॉडी का, ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसिंग ऑफ ए बॉडी. अब डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू किस तक, अनदर पॉइंट. अब क्या होगा, वो फोर्स वर्क डन इंडिपेंडेंट होगा.